So what you have got over here is that you have been provided with a line which is AB like this. This point is A and the other point is B. अब आपके पास दो points आ गए. You have got the first point as A, the last point as B. A के coordinates आपको नहीं पता है, so you'll write them as x, y. While the coordinates of B have been provided, जिनको ये कह रहे हैं 15 and 18. Now what you have been provided over here, like an extra thing is कि आपने mid point की value भी यहाँ पर ले ली है. The examiner is providing you with the midpoint value as well. So you have got 5,24 as the midpoint. अब इस particular concept में मुझे midpoint given है. I've been provided with the corner point. I need to find the first point. तो हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं. The first one is the usual and the school method. The second one is direct method. तो हम पहले एक usual method से इसको करके देखते हैं कि कैसे sort out होगा, and then we'll move on to the trick of it. तो coordinates अगर आपने find करने हो mid point के, तो formula होता है x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. Now the next point over here is कि आपने अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा हो गौर से, तो आप देखें आपको मिड पॉइंट गिवन है. यू हैव बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद 5 and 24 एज द मिड पॉइंट, बट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ बी हैज बीन प्रोवाइडेड. लेकिन ए का जो पॉइंट है हमारे पास वो अननोन है. वी डोंट नो द पॉइंट ऑफ ए. हम क्या करेंगे, हमने एक्स वाई की जगह पे ये मिड पॉइंट रखना है राइट ओवर हियर. सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस 5,24. लेकिन x1 और y1 तो हमें मालूम ही नहीं है. दे हैवंट प्रोवाइडेड अस विद x1 and y1. सो व्हाट विल वी डू, वी विल कंसीडर देम एज अननोन. नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आपके पास x2 और y2 हो जाएंगे. यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ x2 and y2 in their respective places. So this is going to be 15 and this one is going to be 8. Divided by 2 करना नहीं भूलिएगा, बीच में कॉमा लगाना भी लाजमी है. Now what you need to do here is you need to compare the values. अब आप क्या करोगे, values को compare करोगे. So if you see over here, the x coordinate is 5 and over here it's x1 plus 15 divided by 2. तो आप क्या करोगे, आप इन्हें कंपेयर कर लो. So you will make it like 5 is equal to x1 plus 15 divided by 2. You will do the exact same thing with the coordinates of y. y के coordinates के साथ भी हमने exact same काम करना है. So you have got 24. You have got y1 plus 8 divided by 2. अब आपने कंपेयर करना है और आपके पास आ जाएगा 24 is equals to y1 plus 8 divided by 2. अब इसे हम सबने सॉल्व करना है. We have got the concept of algebra. तो algebra की लॉजिक्स पर इसको सॉर्ट आउट करेंगे. So first of all you will take 2 to the other side. 5 times 2 is going to be 10 is equals to x1 plus 15. अब आपने 15 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है and you will have 10 minus 15 is equals to x1. So x1 turns out to be -5. Now for the y coordinate, you will take 2 to the other side. So this 24 will turn into 48. Now you will have 48 is equals to y1 plus 8. Now 8 would be taken to the other side as well. और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 48 minus 8 is equals to y1 and that turns out to be 40. And this is your final answer for the x and y coordinates of point A. तो point A के हमारे पास coordinates क्या आ गए हैं, -5, 40. So this is going to be the final answer. Now if we discuss the
concept of doing all of this particular concept directly. तो directly कैसे होगा ये समझ लेते हैं. Look, your last point is 15 over here and 18 in the y-axis. In fact, it's 8. तो हमारे पास 15,8 जो है वो last point है. We have got the last point as 15,8. Now what you need to do is you need to check for the x coordinate. Like the last point is 15 and the point right behind it, या halfway away from it, is 5. तो 15 से आप कितने points पीछे गए हैं कि 5 पर पहुंच जाएं? Can any one of you tell me? 15 से कितने points पीछे जाएंगे 5 पर आने के लिए? We'll do -10, right? So we will have to do the exact same thing moving from the midpoint to the other corner point. Like 5 से अगर हम पीछे a की तरफ जाना चाहें तो भी हमने exact same concept use करना है. So we will be doing this as 5 minus 10 and this will produce -5 as the x coordinate. अब आपने y coordinate के लिए भी same process करना है. You have 8 and 24. 8 and 24 है आपके पास. So you are basically like making an addition of 16. 8 से अगर आप 24 की तरफ जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? प्लस 16 कर रहे हैं. तो 24 से y की तरफ जाते हो. Like if we are moving from 24 to y, we will do the exact same thing, which is plus 16. And this produces 40 as the final answer. Now we have got the coordinates of x and y in a single step with no working at all. इसकी ट्रिक जो है मैं आपको एक बार और समझाता हूं ताकि ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए. Now let's say if I have a line over here, the initial point is, let's say 2,6, the final point is unknown and the midpoint has been provided as 8,2. तो 8,2 हमारे पास midpoint आ गया है. The first point was 2,6. अब हमने आगे वाला पॉइंट फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे? आप 2 से 8 को कंपेयर करो. 2 के साथ हम ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 8 आ जाए? Can anyone of you guess? What shall we add or subtract with 2 to get 8? We're not multiplying, Manu. We are adding up or subtracting. So we will add 6. So addition of 6 will produce 8. अब जब आप 8 से आगे की तरफ जाओगे तो आप एग्जैक्ट सेम नंबर सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करोगे. So you will again add 6 and the answer will turn out to be 14. Now for the other point, which is the y coordinate, you are moving from 6 to 2. What are we doing over here? What are we like adding or subtracting? Yes, can anyone of you guess? Subtracting 4. Very good. तो हमने आगे की तरफ जाते हुए भी क्या करना है? Subtraction करना है by 4. Can anyone of you guess the point over here? That would be like our point of y. कोई guess कर सकता है? 2 minus 4 is going to produce -2. Very good, Usma. So we have our coordinates for the other side, which is 14, -2. Okay, Mina, what we are doing over here is that we are comparing the values. Like if you see over here, it's 6. और जब आप मिड पॉइंट की तरफ स्विच करते हैं तो आपका वैल्यू सेट हो गया है 2. Like from 6 you have moved to 2. तो आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे आप क्या नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. So what are we adding or subtracting over here? और सबसे पहले ये जज करना है एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन. Yes, Mina, it's -4. Very good. So you will now have an idea कि आप -4 कर रहे हैं. So you'll do the exact same operation over here and the answer would be -2. Now I'm giving you a similar theory और आप लोगों ने जो है
वो इसे डायरेक्टली सॉल्व करना है और मुझे आंसर्स बताना। Okay, so we have the midpoint as 12,7. We have the other side as 8,10. We need to find the first point, which is unknown. तो आप लोगों ने इसे वर्किंग के बगैर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड लेट मी नो व्हाट योर आंसर्स आर, ऑल ऑफ यू। Okay, so we have the first answer as 4,3. सबने सॉल्व करना है और सबने आंसर्स बताने हैं। आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। Ramsha, Huda, all of you need to solve this. Okay, so we are getting 4,3 from almost all of you, and there's 16,4 as well. तो चेक करना है आप लोगों ने आंसर क्या आ रहा है। इज इट 16,4 और 4,3? ओके, तो अब जो है वो सबके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि सही आंसर कौन सा है। So what you have over here is you are moving from 8 to 12. आप 8 से 12 की तरफ आ रहे हैं, which means that you are adding 4. Now you will do the exact same thing over here. Like you are moving from 12 to x, you will do addition of 4. तो आप addition of 4 करोगे, 12 plus 4 is going to produce 16. Then if you see the y coordinate, you are moving from 10 to 7, which means that you are subtracting 3. अब आपने 7 से जब y की तरफ जाना है तो आपने same operation perform करना है. You'll subtract 3 and the answer will turn out to be 4. So it would be 16,4. Now, since many students out of you people are having the wrong answer, तो आप लोगों को एक theory मैं और दे रहा हूँ similar, आप लोगों ने इसे try कर. So we have the final point as 4,6. The midpoint is 18,5. You need to figure out the initial point. आप लोगों ने ये solve करना है, and Nabiha, you need to solve this as well. और नबिया मुझे ये confirm करें if you are perfectly clear with this concept या इसमें कोई problem है. Because since you are joining in the very middle of the lecture और ये chapter हम पहले से continue कर चुके हैं from the previous class, तो अभी जो हमने पढ़ा है ये समझ में आ रहा है आपको या इसमें कोई query है? The rest of you shall continue doing this and let me know what your answers are. Okay, so we have the first answer as 32,4. Okay, so we have another answer of 32,4. बाकी सब भी अपने आंसर्स चेक करें so that we can move further. Okay, since almost all of you are getting the same answer, so we'll now move further. And now we need to understand the concept of equation of a line. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपने सबसे पहले ये समझना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म कैसी होती है. सो स्टार्टिंग अप विद इक्वेशन ऑफ अ लाइन,
Can any one of you like tell me what is the general form of equation of a line? किसी को idea है? Is there anyone who is aware of the general equation of a line? Very good. So it's y is equals to mx plus c. Perfect. अब मुझे कोई ये बता सकता है कि यहाँ पे m किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? What is being represented by this m? Gradient. Very good. And what is being represented by c? c से क्या represent हो रहा है? It's y-intercept. Very good. Yes, Uday, you will receive the notes. No problem. So it's y-intercept over here. Now what you need to do is you need to like have 2 points, like point A and point B are going to be provided to you. और आप लोगों ने जो है उन points को pick करके equation form करनी है. So like if I have a line over here and I have a point A, let's say 2,5, and I have the other point, let's say this is point B, and it turns out to be 6,10. अब मुझे इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई फर्स्ट नीड टू फिगर आउट द ग्रेडियंट. मैंने ग्रेडियंट फिगर आउट करना है सबसे पहले. सो दिस इज गोइंग टू बी y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Can any one of you tell me the value of y2 and y1? Yes, what will be the value of y2 and y1? 10 and 5. Very good. So we'll subtract 10 and 5. And can any one of you tell the value of x2 and x1? 2 and 5. In fact, it's 6 and 2. तो आप कर लोगे 10 minus 5 और 6 minus 2. जब आपने इसे sort out करना है, you will be having 5 over 4. अब this is your choice completely कि आपने फ्रैक्शन में रखना है ग्रेडियंट को या आपने डेसिमल में रखना है. That's completely your choice, and the examiner will have no grudges on either of them. Like examiner would reward equivalent marks to either the fraction or the decimal. कोई टेंशन नहीं है. Now we have the general equation as y is equals to mx plus c. Now since you have got the value of m, आप रखोगे m की जगह पे 5/4. साथ में y और x की जगह पे आपने कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. So you have got 6,10 and you have got 2,5. तो इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आप पिक करें. लाइक ईदर यू कैन पिक 2,5 और 6,10. दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस. आप पिक करें उस पॉइंट को और उसे सब्स्टिट्यूट कर दें in these two places. So let's say if I'm picking up 2,5. So this would be 5 is equals to 5/4 times 2 plus c. तो कुछ इस तरीके से मेरी इक्वेशन जो है वो बनती हुई मुझे नजर आएगी. Now what I need to do is I need to solve this further, and this is going to be 5 is equals to 10/4 plus c. अब आपने क्या करना है, आपने 10/4 को या तो मूव करवाना है डायरेक्टली या फिर आप डेसिमल बनाकर मूव करवा लें. दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस अगेन. तो हम डायरेक्टली अगर मूव करवाएंगे, so this is positive 10/4. We'll switch it to the other side and it will become negative 10/4 is equals to c. अब आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे. And you will have 20 minus 10 whole upon 4 is equals to c. And the answer turns out to be 10/4 is equals to c. तो कुछ इस तरीके से आपके पास c की वैल्यू आ गई है. Now what you need to do in the very final step is that you need to put the value of m, you need to put the value of c in the general equation, और आपने फिर उसे उसी फॉर्म में छोड़ना है इक्वेशन. So the general equation was y is equals to mx plus c
अब आपने क्या करना है, m और c की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है. सो दिस इज गोइंग टू बी 10/5/4 एंड c इज गोइंग टू बी 10/4. तो आप चाहें तो c को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लाइक ओवर हियर इट्स 10/4. यू कुड सिंप्लीफाई इट फर्दर एंड यू विल बी लेफ्ट विद 5/2 and this is going to be my final answer. अब मुझे ये कंफर्म करें if this is perfectly clear to all of you or anyone is there having any sort of queries. सबको क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? Okay, so we are now moving on to a direct method of finding a equation. Like थोड़ा सा इससे एक faster method है, हमने वो method भी समझना है. So in that particular method, it was y minus y1 is equals to m x minus x1. I would personally suggest कि आप ये वाली टेक्निक यूज करें because this is far more quicker और इसमें आपकी जो वर्किंग है वो कम हो जाती है. So the chances of error would reduce as well. तो ये आपके पास एक इक्वेशन है. अब हमने वही सेम पॉइंट्स पिक करने और उन्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. So first of all, m is going to be 5/4 again. तो आपके पास m तो 5/4 ही रहेगा और आपने y1 और x1 की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. So I substituted 2,5. आप 6,10 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. So this is going to be 5 is equals to 5/4 x minus 2. तो अब आप एक चीज अगर और से देखें, आपने x1 की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है और y1 की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट और आप डायरेक्टली 2 से 3 स्टेप के अंदर अपना इक्वेशन बना सकते हो रादर देन डूइंग ऑल ऑफ दीज स्टेप्स ओवर हियर. आपने ये सारे जो स्टेप्स किए थे यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज स्टेप्स वुड बी स्किप्ड और आप सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स के अंदर अपना जनरल इक्वेशन बना पाएंगे. वंस यू आर डन फाइंडिंग द ग्रेडियंट, आप डायरेक्टली अपनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इस टेक्निक से. If any one of you has got any sort of query with this particular format, अगर इस फॉर्मेट के साथ आप में से किसी को भी थोड़ी सी भी क्यूरी है तो आप इसे भूल जाएं, कोई टेंशन नहीं है. आप फिर रेगुलर मेथड यूज करें. सो बोथ ऑफ दीज मेथड्स विल रिवॉर्ड यू इक्विवेलेंट मार्क्स और एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा. द एग्जामिनर वुड रिवॉर्ड यू इक्वल मार्क्स फॉर बोथ ऑफ दीज आंसर्स एंड बोथ ऑफ दीज मेथड्स. लेकिन एग्जामिनर जो है वो ज्यादा प्रेफर करता है कि आप जल्दी अपना पेपर कंप्लीट करें so that you are not missing up on questions. So I personally would say कि आप अगर इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसी को यूज करें. एंड इफ यू हैव गॉट एनी माइन्यूट डिफरेंस एज वेल, लाइक कोई एक माइन्यूट इसमें जो है आपको एम्बिग्यूटी है तो आप इसे छोड़ दें फिर. So that's completely your choice. I have given you both the methods. Now we are moving on to a past paper question. तो अब होता कुछ ऐसे है कि हमारे पास पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आता है saying that 2y is equals to 3x plus 7 and the examiner is asking for the gradient as well as the y-intercept. तो हमने gradient और y-intercept find करना है. तो आप ग्रेडियंट और y-intercept कैसे फिगर आउट करोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का? You have got 2y is equals to 3x plus 7. अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है y is equals to mx plus c और अब जो है आपने कंपेयर करना है. So the problem is that y की जगह पर आपके पास है 2y. You have got 2y instead of y. तो आप क्या करोगे, आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दोगे. You are having 2y is equals to 3x plus 7. You will divide each and every single value by 2. और अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y is equals to 3x over 2 and 7 over 2. और अब आप कंपेयर करोगे x के साथ क्या होता है
ग्रेडियंट होता है. So over here we have 3/2. M is going to be 3/2. Now the same goes for the y-intercept. Anything which is being added or subtracted with x is going to be your y-intercept. तो यहाँ पर क्या है वो value 7/2. The value turns out to be 7/2. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने y को subject बनाना है. Once you are done with making y as the subject, फिर आप कंपेयर करोगे m और c की वैल्यूज को और अपने आंसर्स निकाल लोगे. I'm going to give you a relevant query और आप लोगों ने ये ट्राई करना. So we have 5y minus 2x is equals to 8 and you people need to find m and c. तो आप लोगों ने m और c की वैल्यूज फिगर आउट करनी है और मुझे अपने आंसर्स बताना है, ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक y एज योर सब्जेक्ट और फिर आप कंपेयर करो. Okay, so the first value of m is 2/5. बाकी सबने भी अपने आंसर्स बताने हैं. Let's see what you people are getting as your answers. So the value of c is 8/5. ओके, तो हमारे पास पहला आंसर आ चुका है. बाकी सब भी सॉल्व करें और देखें आप लोगों के आंसर्स यही आ रहे हैं या डिफरेंट हैं. Okay, so Husna is getting the same answer. All of you need to solve this. I'm not getting answers from Huda, Ramsha, and Mina. Okay, so since most of you are getting the same answers, I'll just do this in a bit, और फिर आप लोग देख लीजिएगा if you are doing with the same technique or not. So we basically have 5y minus 2x is equals to 8. आपने सबसे पहले नेगेटिव 2x को पकड़ना है और दूसरे साइड पर लेकर जाना. So it would be positive. 5y is equals to 2x plus 8 आ जाएगा आपके पास. Now you have got 5 as the multiplying number. You'll take it to the other side या फिर आप दोनों sides को divide by 5 भी कर सकते हैं. So this is going to be 5y/5 and 2x plus 8/5, and this produces y is equals to 2/5x plus 8/5. अब आपने कंपेयर करना है. You have got the value of m which is 2/5 and c which is 8/5. Yes, Meena, what's the query? Okay, तो पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो y के साथ हमारे पास था 2. In this particular case we have 5 over here. हमारे पास वैल्यू क्या है? 5 है. So what we need to do is we need to divide by the coefficient. Specific नहीं है कि हमने 2 से ही करना है या 4 से ही करना है. We need to divide by the coefficient of y. Now you people are going to do a similar question. इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन की थोड़ी सी डिफरेंट क्यूरीज को भी ट्राई करना है. तो जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करें, आंसर्स बताएं, फिर हम आगे चलेंगे. So we have 3x is equals to 5y minus 8. In fact, we'll make it 2x and 7y minus 8. You need to find m and c. तो आप लोगों ने m और c की वैल्यू फिगर आउट करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन व्हिच इज 2x इज इक्वल्स टू 7y minus 8. ट्राई करें और देखें आप लोगों के आंसर्स क्या आते हैं.
Okay, so the value of m is 2/7. And the value of c is 8/7. Masood, check your answer. You are getting a wrong value for the gradient. Okay, so almost all of you are getting the same answers. So we are now moving forward. But I want a confirmation from Mina if you're getting the same answer or not. Yes, Mina, are you getting the same answer? Okay, so now we are moving forward. We have a question over here which says that A has coordinate 7, 5 and B has 1, 11. So we have got the coordinates of A and B. We have a query over here that the line AB is perpendicular to CD. Find the gradient of CD. ओके तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हमें A से B तक के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं. They are saying that we have a line AB, something like this, having coordinates 7, 5 and 1, 11. But we have the other line passing through it at 90 degree, like एक perpendicular line pass कर रही है right from this line. Yes, Manu, you are right. So if you have a perpendicular line right over here, तो आपके पास जो coordinates हैं CD के वो given नहीं है. You haven't been provided with the coordinates of C and D. तो अब यहाँ पर problem ये है कि अगर मेरे पास C से D तक के coordinates नहीं हैं, how will I be able to find the gradient then? तो अब मैं gradient find कैसे करूँगा? तो आपने टेंशन नहीं लेनी है. होता कुछ ऐसे है कि जब आप एक पर्टिकुलर लाइन सेट को देख रहे होते हैं और वो दोनों 90 डिग्री पर है तो उनका एक रिलेशन होता है. वो रिलेशन क्या है? दैट इफ आई मल्टीप्लाई द ग्रेडियंट्स ऑफ दीज टू लाइंस द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1. तो हमें पता ये चला कि अगर हम ग्रेडियंट ऑफ ए बी को ग्रेडियंट ऑफ सी डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आना चाहिए? -1. So this is for the perpendicular line. Now can any one of you tell me the gradient of AB if the coordinates are 7, 1 and 7, 5 and 1, 10? तो हमारे पास coordinates आ गए हैं as 7, 5 and 1, 10. आपने ये दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है और मुझे ग्रेडियंट बताना है फॉर द लाइन ए बी. लाइन ए बी का ग्रेडियंट बताइए ऑल ऑफ यू. Now I'm not getting answers from you today. थोड़े मेहनत करें, हाथ पैर चलाएं, वरना मैथ समझ नहीं आएगी. जल्दी जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चंस को. Okay, so we have -1. You haven't checked the coordinates correctly. It's 7, 5 and 1, 10. थोड़ा सा चेंज आ गया है पॉइंट्स में. The point is 7, 5 and 1, 10. Okay, so we have the first answer is 5 over -6. तो आप इसे -5 over 6 भी लिख सकते. Okay, so I guess all of you are getting the same answer for the gradient of line 1, which is AB. तो आप इसको M1 कह सकते हो. Now once you are done with this, आपने M2 figure out करना है.
what you need to do is you need to use that particular equation right from here. अपनी equation use करनी है. m1 times m2 is equals to -1. m1 is provided as -5/6. m2 is unknown, is equals to -1. अब आपने क्या करना है, आप पहले 6 को लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर. इट वाज बीइंग डिवाइडेड, दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट वुड बी -5 टाइम्स m2 इज इक्वल्स टू -6. और ये -5 को जब आप दूसरी साइड पर लेकर जाओगे, it would be m2 is equals to -6 over -5, and the answer turns out to be 6/5. Now this is your gradient for the line CD. अब इसको एक बार और कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप सबको आइडिया हो जाए that how to solve such queries. So let's say if I have a line xy which is perpendicular to mn, where m is 2,10, n is 6,15. So we have been provided with the coordinates of m and n, और हमारे पास ये जो लाइन mn है इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर xy एक लाइन चल रही है. So what you have got over here is that you have a 90-degree angle over here. आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल है. So if you multiply both of these gradients, like आप mn का gradient अगर figure out करें और xy का gradient find करें और उन दोनों को multiply करवाएं, तो आपका आंसर आएगा -1. So this is what the like general equation is. Now you first need to figure out the gradient of mn. m आपके पास है 2,10 and the coordinates of n has been provided as 6,15. आपने इन दोनों को यूज करना है and you need to figure out the gradient for the line mn. The formula for gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. इस फॉर्मूला को यूज करके आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है लाइन mn. Okay, so we have -4/5 as a gradient of mn. Is everyone else getting the same answer? m1 की हमारे पास वैल्यू आ गई है. You need to do. Okay, so Masood, can you tell me the gradient for m1? It should be 5/4. Yeah, correct. Kindly just confirm if rest of you are getting the same answer or not. Okay, so almost all of you, I guess, are getting the same answer. तो आपके पास m1 की एक वैल्यू आ गई है. Now you have the general equation for finding the gradient of perpendicular line. तो आपने m1 की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और m2 फाइंड करना है. So I'll remove m1 from here. I'll put 5/4 and I will figure out the value of m2 from here. So m2 कैसे निकलेगा? 4 is being divided. It would be taken to the other side and it will be multiplied. It's 5 times m2 is equals to -4, and then m2 is equals to -4/5. So this is what your gradient for the line xy shall be. अब एक क्वेश्चन आखिरी में आप लोगों को दे रहा हूँ इस टाइप का. Then we'll move on to the other type of lines. So we have a line AP where A has been provided as 0, 0,
and P is 6, 12. We need to find the gradient of mz if mz is perpendicular to AP. So what you have got over here is that you have been provided with a line A, P, which is having A as 0, 0 and P as 6, 12. With this line, you have a perpendicular line over here. और ये perpendicular line हमारे पास है MZ. You need to figure out the gradient for line MZ. आप सबने इसको solve करना है और अपने answers बताना है. I want answers from all of you. And Mina, are you perfectly clear on this now? Okay, so we have our first answer as -6/12. Mina, can you like figure out the gradient of AP? AP का gradient find कर सकते हो आप? Okay, gradient find करो और जब आप gradient find करोगे, this is going to be x1, y1 and this would be x2 and y2. So you would use the formula for gradient and find the gradient of line AP. The rest of you need to solve this for M2 और आप लोग मुझे M2 का आंसर बताएं. All of you. Okay, so we have the answer as -1/2. Right. Some of you might also get -6/12. तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है. आप इसे सिंप्लीफाई करके 1/2 बना सकते हैं. So if you are getting -1/2 or you are getting -6/12, both of them are exactly same. Mina, the gradient that you are finding is not 0.3. It should be different. I'll show you the working. So it's m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now the value of y2 is 12. If you see over here, y2 हमारे पास कितना है 12. Mina, can you tell me the value of y1? Zero. So this would be 12 minus 0 divided by, can you tell me the value of x2? So it would be 6 and x1 is 0 again. So this would turn out to be 12/6, which is going to be 2. Okay, so basically if you are like giving an answer in such a form that it is equivalent to the final, like the actual answer, then you won't lose mark. Like अगर आप 0.5 ले आते हो या 1/2 ले आते हो या आप 6/12 लिख दें, if the answer like when simplified would be same, you will be rewarded the full marks. तो आपके marks deduct नहीं होते. Okay, Mina, you have got the value of m1 over here as 2. अब आपने m2 के लिए solve करना है. The equation connecting them is right over here. m1 multiplied by m2 is equal to -1. तो अब आपने m1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, which is 2. You need to figure out the value of m2 then और solve करके मुझे आंसर बताएं. I haven't got answers from Husna and probably Ramsha as well.
Okay, in the meanwhile I am like telling you people कि अगर हमारे पास दो parallel lines होती हैं तो फिर हमने क्या करना है. So since we are almost done with the perpendicular line concept, now we are moving on to the parallel line concept. So if AB is parallel to, let's say, DC, find gradient of DC if A is 2,8 and B is 4,16. So we have the coordinates of A and B, और हमें ये बताया गया है कि AB के साथ पैरेलल में चल रही है लाइन DC. So we have the line DC over here. Now the point over here is that whenever you are having two parallel lines, उनके gradients exactly same होते हैं. So the value of M1 is going to be equal to the value of M2. तो आप कह सकते हो कि अगर मैं AB का ग्रेडियंट निकाल लेता हूं तो वही ग्रेडियंट DC के लिए भी हो जाएगा. So what you people need to do is you need to figure out the gradient of AB. Tell me the value of gradient for the line AB, and then we will figure out the gradient for DC. Okay, so Masood has got the answer as 4. Rest of you need to solve this as well and let me know if you are getting the same answers. Anur, Husna, Mina, all of you need to solve this and tell me your answers. Okay, so the gradient of M1 is turning out to be 4. Now, the value of M2 will also be exactly same with no difference at all. तो हमारे पास gradient of AB बराबर होगा gradient of DC के, since they are parallel lines. अब इसको हम एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं, which is going to be the very last concept of coordinate geometry. इसके बाद हमारा चैप्टर आज wrap up हो जाएगा. So we have a line AB. Passing through 3,5 while being parallel to DC. Okay, so we have a line over here which is AB, and this line is passing through a point which is 3,5. Now they are saying that this line AB is parallel to the line DC. DC से parallel है ये line और D का point हमें given है as 10,12 and the point of C has been given as 8,16. Now what you need to do is you need to figure out the equation for line AB. So you are asked to find the equation of line AB. तो अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप line DC को यूज करोगे. You will figure out the gradient for this line. Line DC का gradient हमने figure out करना है. So it's 10,12 over here and 8,16 over there. Now you need to figure out the gradient of DC और फिर DC का gradient निकालकर मुझे बताएं कितना आ रहा है. Okay, it seems to be -2. The rest of you need to confirm this as well. Husna, Mahanu, Mena, all of you need to solve this और मुझे gradient confirm करें if this is -2 or not. Okay, so we have got the gradient as -2.
since almost all of you are getting the same answer, तो हम gradient को consider कर लेते हैं as -2. अब हमने एक concept पढ़ा है that if we have two parallel lines, both of them are going to have the exact same gradient. इनका gradient exactly same होगा. तो हम कह सकते हैं कि लाइन AB का gradient भी -2 ही रहेगा. Since you have got the gradient, you have got the point, अब आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो ए बी की. You have got the gradient, you have got the point, अब आप इक्वेशन फाइंड करेंगे. So it's y is equals to mx plus c. Now the value of m is already provided, which is -2. तो आप रखेंगे -2. y और x की जगह पे आपने रखने हैं ये पॉइंट्स, which is 3 and 5. तो आप 3 रखोगे x की जगह पे, which is over here, and 5 would be in place of y, adding up with c. So it turns out to be -6 is equals to 5 with plus c over here. अब आपने क्या करना है, 6 नेगेटिव को दूसरी साइड पर लेकर जाना है, and it will be added up. 5 plus 6 is equals to c हो जाएगा ये, and it turns out to be 11. Now the general equation would be written down again, which is y is equals to mx plus c. आपने m और c की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी. So the value of m was -2, while the value of c is 11. So it turns out to be -2x plus 11. So that's our final equation. And now what we need to do here is that we need to try out a similar question, but this time you people would be doing this on your own. So we have a line over here, in fact 2 lines. So this one is AB, having coordinates 8 and 20 and 0, 4, while this line DC is passing through a point which is 10, 10. अब आप लोगों ने इस पर्टिकुलर लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है, and this is line DC. Equation of DC is to be found. DC की आपने इक्वेशन फिगर आउट करनी है और मुझे अपना आंसर बताना है, all of you. तो सबसे पहले स्टेप में आप करोगे AB का ग्रेडियंट. वंस यू आर डन विद ग्रेडियंट, वही ग्रेडियंट DC के लिए भी होगा, और फिर आप जनरल इक्वेशन में वैल्यूज रखकर सॉल्व करेंगे. ट्राई इट आउट एंड टेल मी व्हाट योर आंसर्स आर. Okay, so we have the first answer as 2x plus half is equals to y. All of you need to tell me your answers so that we can wrap up our coordinate geometry on this particular concept. Okay, so we have another answer as 2x minus 10. Anyone else who has solved it? Huda, Mina, Ramsha. Okay, so I guess the correct answer is 2x minus 10. Let me just solve this for you people so that you like people could have an idea कि किस तरीके से solve करेंगे और सही answer कौन सा है. So we have 820 over here and 04 over here. आपने सबसे पहले gradient find करना है. So this would be 20 minus 4 divided by 8 minus 0.
So the gradient turns out to be 2. Gradient की value आ गई है हमारे पास as 2. Now you have the coordinates 10, 10 and the gradient as 2. तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे. So this is 2, 10 and 10. And this turns out to be 10 is equals to 20 plus c. 20 को आप लेकर जाएंगे दूसरी साइड पे. It would be subtracted over here. And we'll be left with c is equals to negative 10. अब हमने क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिखनी है वापस और m और c की जगह पे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. So this would be 2 with negative 10 over here. Now it would become 2x plus minus would give negative 10. So the final answer for the equation of DC is y is equals to 2x minus 10. I hope this is perfectly clear. यहाँ पे हमारा concept complete हो गया है for coordinate geometry. आप लोगों को इंशाल्लाह आज या कल तक इसके past papers मिल जाएंगे और आप लोगों ने फिर इसे complete करना है by Saturday. और Saturday की night तक कोशिश कीजिएगा मुझे submit कर दें so that we can discuss the past papers on Sunday. So that's a wrap for today. But before leaving, I want a confirmation from you all if this was perfectly clear. आज हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं क्या ये सारे क्लियर थे या इनमें कोई क्यूरी है? Okay, so Mina, were all the concepts clear? Husna, Huda, Manu, Ramsha. Okay, so see you then in the next class. Take care everyone. Allah Hafiz.